Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Here we see example 1, page 492, mathematical technique. Here this is a second order differential equation. This equation can be solved either by using reduction of order, or we can solve it by using variation of parameter. So here we will solve this equation by using variation of parameter. From this equation is the associated homogeneous differential equation. This is a second order homogeneous differential equation. This equation can be written as d square plus 1 into y is equal to 0. This y double dash means d square y. So here we have d square y plus y, and then this y have been taken common from this equation. This one is the auxiliary equation. Auxiliary equation can also be called characteristic equation. Solving this quadratic equation, d is equal to plus minus iota. These are the two complex roots. Here the real part alpha is 0 and imaginary part is plus minus 1 iota. So alpha is 0 and beta is equal to 1. Complementary function yc can always be written as e power alpha x n to c1 cos beta x plus c2 sin beta x. Here alpha is 0 and beta is equal to 1. So finally we can write yc equal to c1 cos x plus c2 sin x. This is the complementary function. Now replace c1 and c2 by function of x, which are a and b. We have to replace c1 and c2. So y is equal to a cos x plus b sin x. This equation gives the particular integral, or this equation can give us a complete solution. Now we have to find value of a and b by using formula a. Whenever we have to write a, we have to put minus sign here, and we have to integrate by taking this sign. This function is named as v. This is u, this is v. Function u, function v. So to find a, we have to put minus sign here, integral v. This is v into r. This tangent function is r divided by u, v dash minus u dash v. Now v, this v is a sine. This sine function is v. This sine function is our v. So we will put sine here. This r is the tangent x. This is u. This function is u, this is v. So u derivative of v, that is derivative of sine, minus sine derivative of u, that is derivative of cos. Now derivative of sine is cos. Cos into cos is equal to cos square. Derivative of cos is minus sine into minus sine is equal to sine square. So cos square plus sine square is equal to 1. Now this is sine. This tangent is sine over cos. Now sine into sine will be sine square divided by cos. Sine into sine is equal to sine square divided by cos. Now this here we have minus sine square. Using fundamental identity is sine square x plus cos square x is equal to 1. From this identity we can write minus sine square is equal to cos square x minus 1. This is cos, which is here, and here we can put constant c1 or c3. Since here we have constant c1, c2, so here we can put either c1 or c3. It is our own choice whether to put the constant c1 or the constant c3. Now cos square divided by cos equal to cos, and here we have 1 over cos, which is secant x. Now integral of cos is equal to sin x. Integral of secant is equal to log of secant plus tangent plus some constant of integration. Now we have to put, यहाँ पे c1 c2 है, तो यहाँ पे हम c3 भी लगा सकते हैं और c1 भी लगा सकते हैं. जब कभी a और b के साथ जब हम कांस्टेंट लगाएंगे, तो फिर कंप्लीट सोल्यूशन के लिए y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे जब हम a की वैल्यू कांस्टेंट के साथ और b की वैल्यू कांस्टेंट के साथ लगाएंगे, तो ये हमें कंप्लीट सोल्यूशन देगा. तो अगर a और b के साथ हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लें,
तो फिर यही इक्वेशन हमें कंप्लीट सोल्यूशन देगा। अगर ए और बी के साथ हम कांस्टेंट इंटीग्रेशन न लगाए तो फिर कंप्लीट सोल्यूशन के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं y = yc + yp, और yc की वैल्यू हम यही पुट करते हैं, और यहाँ पे a और b की वैल्यू जब हम पुट करते हैं विदाउट कांस्टेंट तो ये yp होगा। तो y = yc + yp से हमें कंप्लीट सोल्यूशन मिलता है। अब इसी एग्जांपल में हम a के साथ कांस्टेंट लगाते हैं, इस तरह b के साथ कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। नाउ b, वी नो दैट b, इसी b की वैल्यू मालूम करने के लिए हम अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये u है, दिस इज़ u, दिस इज़ v। तो इसी b की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इसी फंक्शन को लेते हैं, और ये फंक्शन u है। तो b = u r/u v फार्मूला ए का जो फार्मूला है, बी का जो फार्मूला है, दोनों फार्मूले सिमिलर है, लेकिन ए के लिए हम वी यूज़ करेंगे और साथ में माइनस लगाएंगे, और बी के लिए हम यू यूज़ करेंगे और यहाँ पे प्लस होगा। अब हम पुटिंग करते हैं यू, तो यू क्या है, दिस इज़ यू, दिस फंक्शन इज़ यू। यहाँ भी हम इसी को दिस इज़ यू, तो यहाँ पे हम u पुट करते हैं, u की वैल्यू काज है, r क्या है, दिस इज़ r, तो यहाँ पे हमने पुट किया, और यहाँ जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी हमने मालूम किया है 1, तो u v = 1, तो यहाँ पे हमने 1 इग्नोर किया। अब वो टेंजेंट का मतलब है साइन डिवाइड बाई काज, तो ये काज और इसका जो डिनोमिनेटर है ये वो कैंसिल होगा, तो इंटीग्रल साइन आएगा, और इंटीग्रल साइन = माइनस काज, और साथ में हम इंटीग्रेशन b के साथ, अगर यहाँ c1 है, यहाँ c2 है, तो यहाँ अगर हम c3 लगाएंगे तो यहाँ हम c4 लगाएंगे, या अगर यहाँ हम c1 लगाएंगे तो यहाँ पे हम c2 लगाएंगे। अब वो वैल्यू ऑफ a जो जिसके साथ कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ b इसके साथ भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें कंप्लीट सोल्यूशन देगा। सिंस वी नो दैट y = au + bv, तो a की वैल्यू यही a की वैल्यू है और u की वैल्यू काज है, इस तरह b की वैल्यू हमारे पास यही है और v की वैल्यू साइन है। देख ले, अब यहाँ पे है ये c1, इसी c1 और काज को हम लेते हैं, c1 × काज, तो ये आ गया। अब यहाँ पे c2 है और साइन है, तो c2 साइन आ गया। बाकी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो साइन है, देख ले, ये साइन, ये काज और ये साइन, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर, ये साइन और ये काज आपस में मल्टीप्लाई होकर ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसी काज के साथ इसी c1 को हम यहाँ पे लगाते हैं, इसी साइन के साथ इसी c2 को हम यहाँ पे लगाते हैं, और बाकी यहाँ पे ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है और काज है इसको हम यहाँ पे रखते हैं, और बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है।